बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं सब? क्या हो रहा है आज ये मैं आई हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं चिकन पाई माई स्टाइल विद पोटैटो वेजीज। अभी मैंने चिकन वॉश करके रख दिया है एंड आई पुट लेमन जूस ऑन इट एज़ आई ऑलवेज डू। अभी पैन में सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, फिर हल्का सा सुनहरा होगा, फिर मैं चिकन डालती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे आज। ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट ब्राउन हो गया था, अभी मैंने चिकन डाला है, अब इसका पानी ट्राई करना है। ये है जी इंग्रेडिएंट्स: 2 पैकेट्स ऑफ शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री, soya sauce, sweet chili, ginger garlic paste, mozzarella cheese, black pepper and salt. I don't put chilies in because obviously it's kids don't like it, but these are the ingredients. Chicken abhi cook ho raha hai, waiting for the water to dry, and then I'll show you what I put in. I'll be putting mixed vegetables in as well. देखिए जी, पानी ड्राई हो गया था, वेजिटेबल्स डालने हैं, स्वीट चिली सॉस, what else I put? Black pepper, salt and vegetables, just waiting for the water to dry. ये देखें वाटर सब कुछ ड्राई हो गया है, टेस्ट किया है ब्यूटीफुल। अभी मैं इसको ना दिखाती हूँ आपको कि how I put it in the pastry and in the oven. So this is my dish. I've put a bit of oil in there and now I'm going to put the pastry. ये देखिए जी, चिकन डाल दिया है, उसके ऊपर I've put cheese and now I'm going to cover it with the other pastry sheet and put it in the oven. Please share, like, follow, subscribe and comment below. Let me know what you think, what I could do different. Thank you. This is what it looks like once you put the sheet on. Now I'm going to put it in the oven, which I've preheated for about 25 to 30 minutes. And मैंने कढ़ाई रखती है गर्म होने के लिए। अब बनाते हैं पोटैटो वेजीज, ये गर्म होना, फिर I will dish out and show you how it looks, the final look. देखिए जी, वेजीज पक रहे हैं गरम गरम तेल में, फड़क फड़क सुरख सुरख के अब ये कुक हो रहे हैं। ये देखिए जी, it's cooking, it's slightly brown, just a little bit, for another 5 minutes more, and then I'll take it out, cut it and show you. ये देखिए जी, look, the pie is cooked now, so I'm just going to cut it. I'll show you how. So I've cut it up into squares now. I'll just show you how I serve to my family. So I've served dinner up and that's what the pie looks like from inside. Can you lift the spoon? Food's ready, come sit on the table. That's what it looks like from inside. Sit over there or here. Okay, enjoy. And to finish the night off, we are having corn on the cob. The kids have enjoyed their food. Now it's sweet corn on the cob. Please like, share, follow, subscribe and comment anything you'd do better or how I could do it better. And मुझे और मेरी फैमिली में अपने दोस्त में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।